Now all of you see here numericals. Numericals of AC. So you can see the first numerical. Question number 26. Have you seen question number 26? ये वाला क्वेश्चन है, जिनकी अगर पुरानी बुक हो तो देख लें, दिखाई दे रहा होगा. Have you got this question number 26? Yes, sir. Yes, sir. Now you can see here. Question number 26. For the given circuit, find the reactance. So first you note down what is given in the question. What is given in the question, that you will note down. What is 0.1 Henry? This is L. L equals to 0.1 Henry. Then what is 30 ohm? 30 ohm is R. This is the R. And here it is given V equals to 10 sin 400t. इस इक्वेशन से हमको क्या क्या पता चलता है? V naught और V naught क्या है? 10 वोल्ट ना. एंड व्हाट इज ओमेगा? 400 रेडियन पर सेकेंड. इट इज क्लियर. L पता है, R पता है, V naught पता है और ओमेगा पता है. ये चार चीजें हमको पता है. पहला पॉइंट निकालना रिएक्टेंस. तो देख लो यहां पर किस टाइप का रिएक्टेंस होगा. यू कैन सी हियर देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स L and R. L and R, therefore there will be inductive reactance. There will be inductive reactance. Inductive reactance. It is clear. XL equals to omega L. Whether it is visible or not. ये visible है ना? yes, sir. Yes, sir. Omega is how much? 400. And L is how much? 0.1. So it will be equal to 40. Unit will be ohm. Reactance unit क्या होती है? Ohm होती है. 40 ohm. Then you have to find impedance. Impedance. तो LR सर्किट में impedance अभी हमने बताया Z कितना होता है? XL square plus R square. Whether it is clear? XL square plus R square. This is the formula of impedance in the LR circuit. So what will be this? You substitute XL is 40 का whole square. R is given 30. R is given 30. 30 का whole square. So when you will simplify, it will come out 2500. 2500 means how much? 50 ohm. It's clear. Then you have to find the current, the peak value of current. Peak value of current. तो हमको मालूम है पीक वैल्यू करंट की किस सिंबल से डिनोट करते हैं? आई नॉट से. और पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग होगी. पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. वेदर इट इज क्लियर? पीक वैल्यू जो करंट की होगी वो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग होगी. सो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड. V naught upon Z. It is clear? I naught equals to V naught upon Z. V naught is how much? 10. Z is how much? 50. So this is equals to 0.2 ampere. 0.2 ampere. Then you have to find the phase difference between voltage and current. Phase difference between voltage and current. So you can see here. Phase difference. Here I am doing phase difference between voltage and current. What is the formula? Tan phi equals to XL upon R. Because there are two formulae.
VL upon VR is also the formula, but here we will use XL upon R. How much is XL? XL is given 40. What is R? R is given 30. That is 4 upon 3. So tan phi equals to 1.33. So what will be phi? देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन में देखें tan इनवर्स 1.33 equals to 53 degree. So it is 53 degree. This point is clear? सब लोग इसको पहले समझ लें एक बार, हम फिर से इसको छोड़ रहे हैं, जरा पेन ले लें. Now in question number 27, this is the circuit diagram. You have to find potential difference across resistor and capacitor. So see here, how will you find the potential difference? तो हमको मालूम है VR का फार्मूला क्या होता है, I into R. VC का फार्मूला क्या होता है, I into XC. I into XC. ऐसे में अब हमको XC पता है, R पता है, पर I नहीं पता है. I कैसे आएगा? तो I का फार्मूला क्या होता है, V upon Z. It's clear? So first you find out impedance with the help of this. So impedance of circuit. Impedance of circuit. So Z will be equal to square root के अंदर plus R square. XC that is equal to 30 का whole square plus 40 का whole square. When you will simplify, it will come out 50 ohm. This will come out 50 ohm. Therefore, current I equals to V upon Z. V upon Z means V तो हमको मालूम है 250 and Z is 50. So this is equals to 5 ampere. It is equal to 5 ampere. Therefore, potential difference across resistor. So VR equals to I into R. I कितना है 5, R कितना है 40. That is equals to 200 volt. And potential difference across capacitor VC, it is equal to I into XC. I is how much? 5. XC is you have 30. So it is equal to 150 volt. It's clear? Question number 12. A pure inductance of 1.0 Henry. जिससे पूछेंगे वही आंसर करेगा. What is 1.0 Henry? Who can tell? गीतांजलि. 1.0 Henry ये क्या चीज है? ये सिंबल के टर्म में क्या चीज है? Who can tell? 1.0 Henry is L. हेनरी में दिया है मतलब वो L होगा, इंडक्टेंस होगा. Is connected across 110 volt dash 70 hertz. इसमें क्या दिया है? V दिया है 110 वोल्ट और 70 हर्ट्ज का मतलब F दिया है 70. समझ में आया ना? हमने बताया था जो हर्ट्ज में हो वो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. यू हैव टू फाइंड रिएक्टेंस. रिएक्टेंस मतलब किस टाइप का यहाँ रिएक्टेंस होगा? अगर L है तो किस टाइप का रिएक्टेंस होगा? XL होगा ना. देन यू हैव टू फाइंड करंट. करंट हमको मालूम है, करंट इज इक्वल टू I इक्वल्स टू V upon Z. This is the formula of current. It's clear? And peak value of current, that is I naught. These three things you have to require and you have to find.
पीक वैल्यू ऑफ करंट और ये निकालना है ना। आई सजेस्ट so see here it is given a pure inductance of 1.0 Henry is connected across 110 volt 70 hertz source. Find reactance, current and peak value of current. So see here peak value of current कैसे आएगी, चलो देखते हैं। So see here XL reactance will be XL equals to omega L. Omega L means 2 pi FL. You substitute the value 2 into 3.14, or you can take 22/7 also, because here it is 70. So I have taken only that. ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। L is 1 Henry, so 10, so it will be equal to 440. What is the unit? रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? Sir, ohm. ओम होती है ना। Then you have to find current. So you can see here current I equals to V upon Z. अब Z तो यहाँ पर केवल ये इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में Z क्या होता? केवल XL होता। अगर कैपेसिटिव सर्किट होता तो Z XC होता। अगर रेजिस्टिव सर्किट होता तो Z क्या हो जाता? R हो जाता, क्योंकि और चीजें तो हैं ही नहीं, ये तो केवल इंडक्टिव सर्किट है। सो V upon Z, V is given 110 and Z is given 440, so it is 1 upon 4, it is 0.25 ampere. It's clear. Now peak value of current, it is not possible to find here. Peak value, yes, see here you can find here peak value of current, because this is what I is what I is the RMS value. I is the RMS value. It is clear. जो ये वैल्यूज दी रहती हैं वोल्टेज की, ये सब आरएमएस वैल्यूज है। करंट की जो वैल्यूज दी रहती है, दीज आर द आरएमएस वैल्यू। सो यू कैन फाइंड पीक करंट value of current. This is I naught equals to IRMS into root 2. What is IRMS here? 0.25 and root 2 is 1.414. So when we will simplify, it will come out this 0.25 into 1.414. So this is 0.3535, that is 0.35 ampere. 0.35 ampere. Have you got this question? Yes, सब sir. लोग इसको समझ लें एक बार। Now see the next question. Question number 19 I am doing, and today you will do some questions up to 28 you can do. Up to the question number 28 you can do. So see the question number 19. It has been asked in 2000. So see here, in an AC circuit with all components connected in the series, the EMF and current are given by EMF is V equals to 200 sin 314t plus pi by 6. इतने वोल्ट, this volt, and current is given by I equals to 5 sin 314t, इतने एम्पियर. Obtain the peak values of EMF and current. Who will tell? EMF peak value of EMF and voltage. EMF peak values of EMF and current.
So see here, peak EMF. You can see here, you can compare with the standard equation. V equals to V naught sine omega t plus phi. V equals to V naught sine omega t plus phi. It's clear? I equals to I naught sine omega t. So what is peak value of EMF? V naught equals to 200 volt. It's clear? Then peak value of current. I naught equals to 5 ampere. It's clear? Then you have to find the frequency. So you can see what is omega here. 304. So frequency, angular frequency of AC. Omega equals to 314 radian per second. Omega equals to 2 pi f. That is 2 into 3.14 into f is how much? You have to find. But omega is given 314. So see here, 2 into 3.14 into f equals to 314. So what is f? 314 divided by 2 into, so 314 into how much? You can see here, ये डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ा ले, 100 upon 2 into 314. So this and this cancel. So it is 50 hertz. जब भी फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो f निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी जब पूछेंगे तो क्या निकालेंगे? f. Then you have to find the phase difference. What is the phase difference? Who can tell? 5/6. Phase difference. So you can see here, voltage की phase तो ये है, current की phase ये है, दोनों में difference कितने का है? 5/6. Phase difference between V and I. 5/6. And which one is leading? Voltage is leading or current is leading? Voltage is leading or current? So it is the voltage. Then you have to find impedance. So impedance Z equals to, हमको V naught I naught पता है. अब एक चीज और भी पता है, impedance की वैल्यू हरदम फिक्स रहती है. चाहे तुम V naught upon I naught निकालो या V upon I इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो निकाले या पीक वैल्यूज का रेशियो निकाले, impedance will always remain fixed. So V naught is how much? 200 and I naught is 5. So it is equals to 40 ohm. Impedance is 40 ohm.